So till now we have studied the mathematical tools and vector, and in addition we have completed the chapter 1, that is unit dimension and measurement. उसमें हमने देखी कि अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने देखी. Now let's enter into different physical quantities जो सबके की हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. And therefore write down the chapter headline. It is motion in a straight line. Straight line. Now let us consider. अच्छा, so पहले मैं तुम्हें बताता हूँ पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, इस बारे में बताता हूँ. पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर. Now let us consider. Nishika, where are you now? Sir, in my room. And where is your room? In block B. Okay, and where is block B or D? Sir, it is on the 4th floor. And of which building? Apex building. And where is that building is? Pahada. Huh? Pahada. Okay. Now what I wanted to convey is that, of course, I could not get the proper answer, इसलिए properly connect नहीं कर पा रहा हूँ. Whenever I'm asking you where are you, or suppose I'm asking you where is your home, जब भी मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तो हम क्या बताते हो? एक लोकेशन, एक पोजीशन के बारे में बताते हो. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Now, whenever we are talking about where is that position, वो पोजीशन है कहाँ पे? जैसे तुम्हारा घर है कहाँ पे? You can say that my home is at बुरला. और बुरला है कहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो संबलपुर से 5-6 किलोमीटर है. उसी तरह से बताओगे ना. या फिर सपोज मैं तुम्हें पूछा कि तुम्हारा हॉस्टल कहाँ पे, या फिर तुम्हारा कॉलेज कहाँ पे. कुछ नहीं सर, हमारा कॉलेज जो है वो स्टेशन से 25-30 किलोमीटर दूर पे है, इस डायरेक्शन में. सो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट you are saying the position of your college with respect to a point. एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता रही हो. जैसे कि मैंने तुम्हें पूछा, जैसे कि मैं केजीपी में था, खड़गपुर में था, तो फिर मुझे कोई भी पूछता था तो फिर मैं क्या बोलता था? मेरा घर कहाँ पे है? घर उड़ीसा में. सो रेफरेंस इज उड़ीसा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. घर कहाँ पे? उड़ीसा. देन और अगर कोई उड़ीसा वाला पूछा तो फिर घर कहाँ पे है? घर बरगढ़ में. यस. सो देयरफॉर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कोई भी चीजों का पोजीशन बताने के लिए. दैट पॉइंट जिसके रेफरेंस में हम बताते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट. और हम सारे पॉइंट्स का पोजीशन बताते हैं. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, ये है ओरिजिन. मैंने बोल दिया ये पॉइंट P है, और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन ये है, राइट. और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन से इस पॉइंट को एक एरो ड्रॉ कर लो. ओरिजिन से इस पॉइंट को एक एरो ड्रॉ कर लो. This vector will be giving us the position vector. Yes, sir. तो फिर इस केस में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर this will be equals to, मान लो ये डिस्टेंस x है, then the position vector will be equals to x into I cap. मतलब क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस में x डिस्टेंस में है, सो x into I cap. इसी तरह से वेक्टोरियली हम इन चीजों को सिंबलिफाई करते हैं. यस और नो? यस सर. या फिर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को हम लोग सिंबलिफाई करते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू x I cap. अगर मैं इसको 1D ना लेके मैं अगर 2D ले लेता,
ये मान लो x एक्सिस है और मान लो कि ये y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट है जहां जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है p(x,y). yes sir, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये वाला, दिस विल बी r वेक्टर। और इसका r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? भूल गए? r वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप yes sir, and प्लस plus y2 y2 minus माइनस y1 y1 इंटू जे j कैप। cap, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप। yes sir, सिमिलरली मैं अगर x y z तीन एक्सिस यहाँ पे ले लेता हूँ, y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस मान लो, yes sir, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर first, दिस विल बी इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। yes दिस sir, विल बी द पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को खुल के बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं yes है। sir, तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तुम्हारा पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कहाँ पे है, राइट? तो फिर ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? सो देयरफॉर हियर यू राइट डाउन, नेक्स्ट हम एंट्री ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Now what is reference point? लिख लो, the point from which the point from which all the measurements are done, all the measurements are done is called reference point, is called reference point। जैसे कि हमारा ओरिजिन, इन तीनों के केसेस में ओरिजिन भी बिहेव कर रहा था ना रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। नाउ व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? लिख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस is the system of x, y and z axis. Frame of reference is the system of x, y and z axis with respect to which all the measurements are done, all the measurements are done। तो फिर देखो इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ये हमारा तीनों एक्सिस, और ये पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लिया है, राइट? yes sir, ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एंड दैट इज, मान लो हम कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, yes, बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो इसका दो तो सिनेरियो हो सकता है, या तो ये चुपचाप है या फिर ये चुपचाप नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चुपचाप है? दैट मीन्स द बॉडी it is not changing its position with time, so that means it is not changing its position with time। टाइम के साथ ये अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, टाइम के साथ ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट केस इज changing its position with time।
So the case when it is not changing its position with time, this is called as rest. The body is in rest. If the body is not changing its position with time, then the body is said to be in rest. And if the body is changing its position with time, then the body is said to be in motion. Yes, sir. Right? This is called as motion. Rest मतलब जैसे कि एग्जांपल दे दूं तो तुम्हारा टेबल रेस्ट में है, तुम्हारा बिल्डिंग रेस्ट में है, पेड़ रेस्ट में है, तुम भी अभी रेस्ट में हो. So that is what is rest. You are not changing your position with time. But talking about motion, aeroplanes are in motion while they are moving. Planets are in motion. The different vehicles are in motion, isn't it? Now, Yes, sir. motion जब हम बात करते हैं, motion 3 लेवल में बात किया जा सकता है. One is called as motion in a straight line. Second one is called as motion in a plane. Second one is motion in a plane. Next one is motion in space. मोशन इन स्ट्रेट लाइन का तुम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो. If one coordinate axis is required to describe its motion, then it is motion in a straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम एक बॉडी को लिए ऊपर से ड्रॉप कर दिए एक हाइट से, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दे आर हैविंग मोशन इन वन डी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट? सो देयरफॉर एग्जांपल में लिख लो फ्रीली फॉलिंग बॉडी. सेकंड केस में लिख लो if two coordinate axes are required for describing the motion, then the motion is called motion in a plane. एग्जाम्पल बताओ. Sir, moving vehicle. Yes, moving vehicle, correct. मूविंग व्हीकल हो सकता है, फिर हमारा टिप ऑफ द फैन हो सकता है, फिर हमारा हमारा वॉच का टिप ऑफ द हेड हो सकता है उसका. फिर हमारा और क्या हो सकता है? मूविंग व्हीकल. हम लोगों का मोशन भी जो रहता है वो सारा का सारा मोशन इन ए प्लेन रहता है, isn't it? So those are the example. Next, motion in space मतलब if three coordinate axes are required, isn't it? If three coordinate axes are required, इसमें सारा का सारा एग्जाम्पल आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट बॉल जब खेल रहे हैं तब, isn't it? बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ये सारा का सारा मोशन है. तो हम लोगों के सिलेबस में हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, अगले वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, और इसको हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे. गॉट इट? तो पहले इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे. सो लेट अस मूव अहेड विद मोशन इन स्ट्रेट लाइन. देख लो आउटलाइन.
अच्छा मुझे बताओ कि तुम जिस कमरे में हो उसका एक कॉर्नर से अगर एक मच्छर अगर सीधा सीधा दूसरे कॉर्नर में चला जाएगा तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा या फिर मोशन इन ए प्लेन होगा या मोशन इन स्पेस होगा? मोशन इन स्पेस। नहीं, सीधा सीधा चला गया ना एक लाइन पे तो यस मोशन सर। स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह का है, मान लो तुम्हारा रूम जो है तो वो क्या करता है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर को सीधा सीधा आ जाता है, तो हम उसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, उसको यस एक्स एक्सिस लेंगे तो फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। ये समझो। ओके, जब भी बॉडी मोशन में आ जाता है तो वो कुछ पाथ लेंथ कवर करता है और वहीं से हमारा दो टर्म आ जाता है, दोज आर कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस सर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख लो। when a body under when a body under motion covers some path, when a body under motion then it covers some path length। रेस्ट में तो कुछ नहीं है बट मोशन में है तो वे कुछ पाथ लेंथ कवर करता है। अभी पाथ लेंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर ये पाथ लेंथ को दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। Now whenever we are talking about this path length, ये path length हमें दो चीजें बता सकता है, या तो ये बता सकता है the total path length या फिर ये हमें बता सकता है the shortest path length। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ आता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आता है दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस गो एंड स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। फर्स्ट डिस्टेंस, इसको डिनोट कर सकते हो x के साथ। Now write it down. It is the total path length covered by the body. It is the total path length covered by the body between initial and final position. Between initial and final position. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना टोटल पाथ लेंथ उसने कवर किया है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, राइट। देन एक हाइफन देके लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला चीज ये तो टोटल पाथ लेंथ हुआ, then you write down it is a scalar quantity। then इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट मीटर पर सेकंड। नहीं, मीटर, डिस्टेंस चल रहा है। यस सॉरी, ठीक है डायमेंशन सर। डायमेंशन L। यस L, L1 बोल, L1 L, ठीक है, राइट। नेक्स्ट सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। दोनों को मिला के मैं एग्जांपल दूंगा। डिस्प्लेसमेंट इसको S से डिनोट किया जाता है। नाउ राइट डाउन द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन, ऐसा लिख लो, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, it is the shortest path length between initial and final position। initial and final position
एक हाइफन देके लिख लो, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है, shortest path length. Thereafter you can write down that it is a vector quantity. It is a vector quantity directed from initial position to final position. It is a vector quantity directed from initial position to final position. Yes. इसका फिर से क्या देगा, SI यूनिट और डायमेंशन? SI यूनिट मीटर. Yes. Dimension? L1. Yes. M0 L T0. M0 L1 T0. ठीक है, L1 भी acceptable है, right? So this is what is displacement. अच्छा चलो, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैं ये बता देता हूँ. मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे था, ये है इनिशियल पोजीशन, यहाँ तक गया, ये है फाइनल पोजीशन. तो फिर वो मान लो ऐसे करके गया है, ऐसे करके. सो दिस इज कॉल्ड एज टोटल डिस्टेंस x, एंड दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s. इसको ड्रॉ कर सकते. डन? यस सर. तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग. क्वेश्चंस नंबर 1. मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है ए में, और यहाँ पे एक बी पॉइंट है. तो ये क्या करता है, ए से लेके बी को चला जाता है. ये है 100 मीटर. ए से लेके बी को चला जाता है, और बी से और फिर से मिड पॉइंट को फिर से वापस चला आता है. मिड पॉइंट सी, ये मिड पॉइंट सी को वापस चला आता है. तो मतलब ये है 50 मीटर. तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? The distance is 150 meter. Displacement is 50 meter. Yes, it will be 50 मीटर. टोटल डिस्टेंस को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर गया, फिर से वापस आया 50 मीटर. तो 100 और 50 150 हो गए. और इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है, इन दोनों में डिस्टेंस 50 मीटर है. सो दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर. करेक्ट. ओके, स्टेटमेंट दे देता हूं तुम्हें, अदरवाइज ये हो सकता है. ए पर्सन गोज ईस्टवर्ड, a person goes eastward by a distance 80 meter, by a distance 80 meter, then turns northward for 60 meter, then turns northward for 60 meter. Full stop. Calculate the distance and displacement of the person. Calculate the distance and displacement of the person. पर्सन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? So distance होगा 140 and होगा 100. करेक्ट. तो इसको जानने के लिए देखो, तुम्हें पता नहीं तुम कौन सा मेथड फॉलो किए होंगे. इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना. यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो पहले से वो ईस्टवर्ड को गया 80 मीटर. तो इस डायरेक्शन में गया वो पहले 80 मीटर, फिर वो नॉर्थवर्ड में चला गया 60 मीटर. ये डिस्टेंस हो गया 60 मीटर.
तो टोटल डिस्टेंस हो गया 80 प्लस 60 दैट इज 140 मीटर, वो डिस्टेंस जो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच में ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाता है कि 100, इसलिए ये हो जाएगा 100 मीटर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। A monkey goes 40 meter northward, then 30 meter eastward, and then climbs up a tree of 120 meter, and then climbs up a tree 120 meter. First stop. Calculate distance and displacement covered by the monkey. सर डिस्टेंस होगा 190 मीटर 190 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा 170 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 170 मीटर। देखो सिंपल, डिस्टेंस तो हमारा 190 हो जाएगा बिकॉज 40 प्लस 30 प्लस 120 दिस इज इक्वल टू 190, डिस्टेंस हो जाएगा 190 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा, देखो पहला चीज वो नॉर्थवर्ड जा रहा है, नॉर्थवर्ड जा रहा है मतलब ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लो, एक्स वाई और जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और जेड किधर होगा? परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, राइट। तो क्या करता है वो, पहले नॉर्थवर्ड में जाता है 40 मीटर, फिर ईस्टवर्ड में जाता है 30 मीटर, फिर 120 मीटर जाता है हाइट में, हाइट में मतलब जेड एक्सिस में जा रहा है, isn't it? यस सर। तो मतलब कि ये है y में इसने गया 40 मीटर, इस 40 इज इक्वल टू y ले लो, 30 इज इक्वल टू x ले लो। अभी वो z में जो जाएगा ना, ऐसे करके z में वो चढ़ रहा है, z इज इक्वल टू 120 मीटर। यस सर। सो ये मंकी अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया तो सोचो तुम, ओरिजिन से स्टार्ट किया तो फाइनली वो कौन सा पॉइंट में पहुंचेगा? फाइनली वो जो पहुंचेगा दैट विल बी पॉइंट विल बी x y and z, isn't it? यस सर। so x y and z मतलब ये क्या है? x में है 30, y में है 40 और z में है 120। यस सर। यस। कहां से स्टार्ट किया था? ओरिजिन से स्टार्ट किया था। ओरिजिन और ये पॉइंट में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैथमेटिकल टूल, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। yes, it will be under root of x square plus y square plus z square, so therefore this will be coming out to be 130 meter. Is it clear? यस सर। ठीक है, next question number 4. Let us consider a person is is moving in a circular park. एक सर्कुलर पार्क में एक पर्सन मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पार्क का रेडियस है मान लो 20 मीटर, और ये पॉइंट है मान लो ए,
ये पॉइंट है मान लो बी, ये पॉइंट है मान लो सी, और ये पॉइंट है मान लो डी। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, राइट? इसी तरह से है। नाउ अगर पर्सन जा रहा है अगर ए से लेके बी को, तो फिर निकालो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर पर्सन जा रहा है ए से लेके सी को, तो फिर निकालो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से लेके डी को जा रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ए से लेके वापस ए को आ जा रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। निकालो कौन सा कितना कितना होगा। सर पहले वाले का डिस्टेंस तो 31.4 मीटर होगा। पाई के फॉर्मेट में बताना कितना आ रहा है। सर पाई 10 पाई आई। 10 पाई आ रहा है, यस ओके। सर। तो इस केस में ये जो हो जाएगा, दिस वन विल बी 2 पाई आर बाय 4, so यस this सर। will be equal to pi r by 2, pi r का वैल्यू है 20 divided by 2, 10 pi, करेक्ट। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट, कैसे ढूंढेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो यस सिंपल, इसको ज्वाइन कर दो। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यस सर। तो फिर ए से लेके बी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा रूट रूट 20 स्क्वायर प्लस। हाँ ये भी 20 होगा ना, तो ये 20√2 नहीं होगा, चेक करो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सर एक मिनट, 4 20√2 आ रहा है। यस, डिस्प्लेसमेंट विल बी 20√2। चलो सेकंड वाला निकालो, ए से लेके सी। सर सेकंड वाले का x होगा 20 पाई, s होगा 40 मीटर। यस गुड, दिस विल बी 40 मीटर, करेक्ट आंसर। बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये 20, ये 20, 40 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2, करेक्ट। आगे बढ़ो। सर नेक्स्ट वाले का शायद 30 पाई आएगा क्या? यस, डिस्टेंस आ जाएगा 30 बाय और
20 root 2. Yes, this will also be 20 root 2, correct, because ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 10 पाई प्लस 10 पाई 30 पाई, और ये डायगोनल जो हो जाएगा 20 रूट 2 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट वाला, सर डिस्टेंस होगा 40 पाई, डिस्टेंस हो जाएगा 40 पाई, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्या? यस, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल पोजीशन जहां पे है फाइनल पोजीशन भी वही है, सो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट ही है ना, so that is why displacement will be 0. So next, write it down, comparison between distance and displacement, एक कंपैरिजन हम कर दिए थे। Now, point number 1. Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Right? Yes, sir. Point number 2. Distance can never be negative, whereas displacement can be. डिस्टेंस क्या होगा, इधर उसका वैल्यू 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, whereas displacement can be negative. Point number 3. Point number 3 ये है कि देखो, मान लो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा ये है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। इसके अलावा कोई भी पाथ लिया जाएगा, देन वो पाथ जो होगा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर राइट डाउन, डिस्टेंस इज always greater than or equal to displacement. Distance is always greater than or equal to displacement. इसको लिख सकते हैं। So almost हमेशा डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बड़ा रहेगा, लेकिन एक कंडीशन है जहां पे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। क्या कंडीशन हो सकता है बताओ ना? The initial and final position are same. इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। ठीक है, मान लो ये सर sorry एक मिनट, if the motion is in a straight line, ओके, मोशन अगर एक स्ट्रेट लाइन में हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, राइट? yes, देखो दोनों का मोशन सेम एक ही लाइन पे है ना। नहीं सर, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। देखो, पहला कंडीशन होना चाहिए कि वो दोनों एक लाइन पे मोशन होना चाहिए। दूसरा चीज, बॉडी कभी भी रिटर्न नहीं आना चाहिए। रिटर्न हुआ मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट घटेगा, तो उसका डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो देयरफॉर राइट डाउन, फॉर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन, only for unidirectional straight line motion, only for unidirectional straight line motion, distance equals to displacement. Distance equals to displacement. बाकी हर एक केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। Yes. Yes, sir. Next, point number 4. Distance is path dependent, whereas displacement is path independent.
Distance is path dependent, whereas displacement is path independent. देखो ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो फाइनल पॉइंट है, तो बॉडी अगर इधर से आएगा जो डिस्टेंस होगा इधर से आएगा डिस्टेंस अलग होगा, लेकिन दोनों केस के लिए डिस्प्लेसमेंट यही ही होगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, x1 x2 के ऊपर डिपेंड करता है, whereas डिस्प्लेसमेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो खाली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो देयरफॉर फुल स्टॉप देके लिख लो, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, total distance can be calculated using algebraic sum of individual distances, whereas total displacement can be calculated by vector addition of individual displacements. फिर कोई भी मोशन में टोटल डिस्टेंस अगर पूछ लिया, टोटल डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट एज x is equals to x1 plus x2 plus x3, इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को तुम ऐड कर सकते हो, whereas total displacement for calculation of total displacement you need to do the vector addition, s1 vector plus s2 vector plus s3 vector plus dot dot dot, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, right? So these are the comparisons between distance and displacement. Next, distance और displacement से हमारा नेक्स्ट टर्म में हम आ जाते हैं, कितना रेट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है या फिर पोजीशन चेंज हो रहा है। सो देयर वी आर कमिंग टू द 2 पॉइंट्स, दोज आर स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। राइट डाउन, rate of change of distance is called speed. Rate of change of distance is called speed. So that means speed will be equal to dx by dt. This is what is speed. फिर बताओ ये एक स्केलर होगा या वेक्टर होगा? देखो dx मतलब चेंज इन डिस्टेंस व्हिच इज स्केलर क्वांटिटी, dt मतलब चेंज इन टाइम, टाइम इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर पे स्केलर क्या हो जाएगा? स्केलर। सो देयरफॉर दिस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन बताओ। सर एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, करेक्ट। और डायमेंशन m0 l1 t minus 1, करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड बेसिकली दो टाइप का रहता है। पहला वाला लिख लो, बिट ए में लिख लो या फिर 1 कर लो, इसको तो बेटर रहेगा।
First one is called as uniform speed. Write down what is uniform speed. If a body covers equal distance in equal time interval, if a body covers equal distance in equal interval of time, comma, however small this time interval may be, comma, however small these time intervals may be, comma, and then the speed of the body is uniform speed. Then the speed of the body is uniform speed. अच्छा, यहाँ पे however small this time interval में भी क्यों बताया गया? मान लो एक बॉडी हर 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, सो ये 1 सेकंड में वो कितना गया? 10 मीटर गया। ये 1 सेकंड में भी वो 10 मीटर गया, मान लो। तो फिर क्या हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड बता सकते हैं? Yes, sir. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? Yes, sir. क्योंकि मान लो उसने पहला आधा सेकंड में गया था 6 मीटर, फिर आधा सेकंड में गया 4 मीटर। तो देखो पहले 6 जा रहा है, फिर 4 जा रहा है, पहला आधा सेकंड में 6 मीटर जा रहा है, फिर आधा सेकंड में 4 मीटर जा रहा है। सो डज दैट मींस दैट द बॉडी इज इन हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड? नहीं। No. सो तुम जब टाइम को कितना भी छोटा कर दो, बॉडी सेम डिस्टेंस ही जाएगा, देन द स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड. That is why I have used the term however small this time interval may be. Yes, Next, bit B, bit 2, non-uniform speed. Non-uniform speed. Now write it down. If the body covers unequal distances in equal interval of time, comma, however small this time interval may be, comma देके लिख लो, however small this time interval may be, then the speed is non-uniform speed. Then the speed is non-uniform speed. एक्चुअली इस स्पीड को हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं, इसलिए हेडलाइन पे लिख लो वेरिएबल स्पीड, बिकॉज इट्स स्पीड इज ऑलवेज चेंजिंग. तो स्पीड अगर हमेशा चेंज होता रहेगा तो फिर हम उसका स्पीड का वैल्यू कैसे बताएंगे? कितना स्पीड था बोलने से कैसे बताओगे आखिर? So in that case we are going to use the term that is called as average speed. So non-uniform speed को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला टाइप आ जाता है that is called as average speed. Non-uniform speed को हम लोग average speed से डिनोट कर सकते हैं. So this is V average. So therefore average speed का मतलब लिख लो, it is the total distance by total time. It is the total distance, or it is the ratio of total distance to total time. It is the ratio of total distance to total time. Yes. Yes, sir. So therefore here you can write down that average speed.
V average, this will be equals to total distance divided by total time. And folks, this one. Now this is the average speed. Average speed मतलब क्या? Suppose तुम भुवनेश्वर लेके संबलपुर को आ रहे हो, तुम्हारे घर को आ रहे हो, तो तुम टोटल कितना डिस्टेंस गए? 350 किलोमीटर। कितना टाइम लगा? 5 घंटा मान लो लगा। तो फिर तुम्हारा एवरेज स्पीड जो आ जाएगा दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। यस, क्या उसका मतलब तुम्हारा स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर था? नो, दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो जो हर वक्त जो रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो देयरफॉर सेकंड कैटेगरी में लिख लो, बिट बी में लिख लो इंस्टेंटेनियस स्पीड। Instantaneous speed. So write down the speed of the body. The speed of the body at a particular instant. At a particular instant is called instantaneous speed. At a particular instant is called instantaneous speed. So instantaneous speed is V instantaneous. This will be equals to dx by dt. Rate of change of distance. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा total distance. Total distance means delta x divided by delta t. Yes sir. फॉर्मूला को भी नोट करके तुम रख सकते हो. Yes sir. तो चलो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. मान लो एक बॉडी है जो कि पहले 5 सेकंड में हो जा रहा है 20 मीटर, फिर 5 सेकंड में हो जा रहा है 30 मीटर, फिर 5 सेकंड में हो जा रहा है 40 मीटर. तो इसका स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म? डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म. कैन यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड? Yes sir. Six seconds. 6 सेकंड? Sir, 6 meter per second. Sorry. 6 मीटर पर सेकंड. ओके. 40 30 70 20 90 90 by 15 6. Yes, so this will be 20 plus 30 plus 40 divided by 5 plus 5 plus 5 15. So we'll be getting to be 6 meter per second. Correct. अच्छा, मान लो कि एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ फॉलोइंग रिलेशन. क्वेश्चन नंबर 2. उसका पोजीशन जो रहता है, एक्स पोजीशन जो रहता है, x इज इक्वल टू रहता है 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1. तो टाइम के साथ उसका पोजीशन इस तरह से चेंज हो रहा है. Yes sir. So can you calculate speed is equal to how much at bit A में दे दो 1 सेकेंड, bit B में दे दो 2 सेकेंड, bit C में दे दो 3 सेकेंड. 1 सेकेंड में उसका स्पीड क्या है? मतलब 1 सेकेंड पर्टिकुलर इंस्टेंट में, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड में पूछ रहा हूँ इसके से. What is the instantaneous speed at 1 second, instantaneous speed at 2 second, and instantaneous speed at 3 second?
Sir, instantaneous speed at 1 second, 9 meter per second. अच्छा, तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। Yes. इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 40, तो दैट इज इंप्लाइड एंड यस, इस केस में v इज इक्वल टू हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर लो 9 हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड। इस केस में कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 t इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, 4 दूनी 8 meter per 13, second. यस 13 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट इज द स्पीड इन केस 3? 70 meter per second. 17 meter per second, correct? Yes. So this is what is called as instantaneous speed and the average speed. Now let us go and talk about average speed in different situations. So लिख लो average speed in different situations. अलग अलग केसेस में एवरेज स्पीड कैसा आएगा, किस फॉर्मुलेशन के साथ आएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो बीट ए में लिख लो, बीट ए में लिख लो, अलग अलग सिनेरियो हम देखेंगे। बॉडी मूव्स विद डिफरेंट स्पीड body moves with different speed for different time interval, for different time interval। मतलब क्या है, मान लो बॉडी जो है v1 स्पीड में गया t1 टाइम इंटरवल के लिए, v2 स्पीड में गया t2 टाइम इंटरवल के लिए, तो सिमिलरली v3 टाइम में गया, v3 स्पीड में गया t3 टाइम इंटरवल के लिए, राइट? सो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सो दैट इज इंप्लाइड देन v एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सो x टोटल डिवाइडेड बाय t टोटल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इस केस में मान लो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। So that is implied and you can write it down that v average this will be equals to, देखो यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा, v1 स्पीड में t1 टाइम के लिए गया तभी जाके उसका डिस्टेंस बना x1, तो इन तीनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, v1 is equals to x1 by t1। Yes, so sir. that is implied and x1 is equals to क्या हो जाएगा v1 t1। Yes, sir. so कर दो x1 is equals to v1 t1 plus x2 is equals to v2 t2, similarly x3 is equals to v3 t3 whole divided by t1 plus t2 plus t3। This is the average speed in this scenario where the body is moving for different speed with different speed for different time interval, right? अच्छा, इसका एक स्पेशल केस बनेगा, now you can write it down। if a body moves half of the time of motion with speed v1, half of the time of motion with speed v1 and rest half of the time of motion with speed v2 and rest half of the time of motion with speed v2, then v average this should be equal to, v average का फॉर्मूला क्या रहता है, v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 divided by t1 plus t2 plus t3। Yes, sir. दो मोशन है, so therefore ये हो जाएगा v1 t1 plus v2 t2 divided by t1 plus t2। yes or no, here the v1 t1 is the x1 and v2 t2 is the x2। चलो पुट कर लो v1 into
टोटल टाइम मान लो t है, तो ये हो जाएगा t/2 प्लस v2 इंटू बचा हुआ भी t/2 ही होगा, t/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t/2 प्लस t/2 हो जाएगा t/2 प्लस t/2 तुम्हारा आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करने को जाओगे तो फिर ये t आर गेटिंग कैंसिल, ये हो गया v1/2 प्लस v2/2, so that will be equals to v1 plus v2/2। यस यस सर। अच्छा, ये अगर 3 ऐसा रहेगा तो फिर कैसा रहेगा? सो देयरफॉर नेक्स्ट होमवर्क में लिख लो P average that is equals to how much if a body moves with speed v1 for time t/3, then with v2 for t/3 and lastly with v3 for t/3 ये निकाल के आज ही तुम लोगों को सबमिट करना है ये होमवर्क। यस सर। you have to submit this one। यस। so तुम एक पीडीएफ बना के मुझे भेज देना, डन? यस सर। v एवरेज निकाल लेना। यस ट्राई करना, इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3/3 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट केस 2 लिख लो, बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस with different speed। मान लो बॉडी जो जा रहा है x1 डिस्टेंस जा रहा है विथ स्पीड v1, x2 डिस्टेंस जा रहा है विथ स्पीड v2, x3 डिस्टेंस जा रहा है विथ स्पीड v3। तो फिर ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? सो दैट इज इम्प्लाइड दैट यू कैन राइट डाउन दैट एवरेज स्पीड v average this is equals to total distance by total time। total distance is x total divided by total time is t total। x total क्या हो जाएगा? that will be equals to x1 plus x2 plus x3 divided by t total क्या हो जाएगा? this will be equals to t1 plus t2 plus t3, right? यस सर। अभी देखो यहाँ पे x1 v1 और t1 में रिलेशन क्या है? v1 is equals to x1 by t1, yes or no? so that is implied that t1 is equals to क्या आ जाएगा? सर t1 is equals to क्या आ जाएगा? सर v1 by x1 by v1 आएगा। sorry x1 by v1। यस सर। x1 by v1, so t1 is equals to x1 by v1, t2 is equals to x2 by v2, t3 is equals to x3 by v3। so therefore this is equals to, you can find it as x1 plus x2 plus x3 divided by x1 by v1 plus x2 by v2 plus x3 by v3। yes? यस। इसका चलो हम स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिख लो स्पेशल केस। ओके, लिख लो, if a body covers half of the distance with speed v1, if a body covers half of the distance with speed v1 and rest half of the distance with speed v2 and rest half of the distance with speed v2, then v average is equals to, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है?
x1 plus x2 divided by t1 plus t2. Yes, sir. ये रहता है ना. Yes, x1 sir. कितना है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस. हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब x by 2 हम लिख सकते हैं. x2 कितना है? रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब x by 2 डिवाइडेड बाय t1 को हम क्या लिख सकते हैं? x by 2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस t2 को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस x by 2 डिवाइडेड बाय v2. Yes, sir. So therefore ऊपर से और नीचे से x by 2 को कॉमन ले लो. What you are going to get? X by 2 into 2 Yes, sir. divided by x by 2 into 1 by Yes. v1 plus 1 by v2. So common Yes. जो लिए थे उसको cancel कर दो. What you are going to get? 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. So that will be equals to 2 divided by the LCM will be v1 v2 and this will be Yes, sir. v2 plus v1. Yes, sir. So what you are going to get? You are going to get it to be 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. This is the average speed where body covers half of the distance with speed v1 and rest half of the distance with speed v1 and rest half of the distance with speed v2. 2 v1 v2 by v1 plus v2. इस फॉर्मूला को याद रखना. यस, चलो होमवर्क इसको भी एक पीडीएफ बना के भेजना. Calculate the average speed. Calculate the average speed if a body covers 1/3 distance with speed v1, 1/3 distance with speed v1, next 1/3 with v2, next 1/3 distance with v2, and last 1/3 with speed v3, and last 1/3 with speed v3. इस केस में तुम एवरेज वेलोसिटी निकालना. एक बार निकाल के मुझे पीडीएफ बना के भेज देना. इसका आंसर तुम याद रखो. v एवरेज तुम्हारा जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 v1 into v3 divided by v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. This answer we getting it right. आज का क्लास को हम यहीं तक पढ़ेंगे. लेट्स एंड इट. अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा. ठीक है. सो बहुत सारा न्यूमेरिकल